हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुल राजपूत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर और आपकी दुआ से आई एम डूइंग सुपर फैंटास्टिक। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, I would like to thank all my old and new subscribers. Thank you so much for giving me the support. I really appreciate that. All those who have not yet subscribed, do consider subscribing my channel. अगर आप उनमें से हैं जिसकी कड़ी हमेशा अलग बनती है, सेम टेस्ट नहीं आता है, then do follow this recipe. Note down the measurements and make perfect curry every time. So let's get started. Very simple recipe. Everybody knows how to make curry. But मैं इस तरह से बनाती हूँ. Half tomato I've added, half onion I've added, few curry leaves. ये मेरे dried curry leaves हैं. Okay, and few stems of coriander. बस इसे blend कर लो. Now the curry that I'm making is पालक की पकोड़ों की कड़ी. तो यहाँ पे मैंने पालक चॉप कर लिया है. I've taken little coriander, chopped green chilies, half onion chopped fine. तो ये सब मैं पालक में डालने वाली हूँ. पालक है अराउंड 3 कप्स. और ये रहा मेरा मसाला जो मैंने ब्लेंड कर लिया. इसे ब्लेंड करके हम साइड में रखेंगे और अब चलते हैं कड़ी के तरफ. कड़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा वाला ब्लेंडर ले लिया है और हम लेंगे दही. अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो उसको थोड़ी देर 4-5 घंटे के लिए बाहर छोड़ दें, वो अपने आप खट्टी हो जाएगी. कड़ी के लिए खट्टी दही ज़रूरी है. आई हैव टेकन हियर 1 कप कर्ड. ये मेरा हाफ कप का मेजरमेंट है. If you find difficult to set curd, then check this link on the screen and follow that method. There I've shown you the perfect way of setting curd. That also magic curd. So do ensure that you visit that video. I've taken here half teaspoon whole zeera. I've taken 1/4 teaspoon methi seed, little hing, and half teaspoon mustard seeds as well. Now let's make the palak ki pakodi. Here I've added the 3 cup palak, coriander, half chopped onion, green chili, 1 teaspoon ginger garlic paste, and in total I have taken 3/4 cup besan यानी चने का आटा, चिकपी का आटा. And now we'll be adding some dry masalas to this. So first I've added 1 teaspoon salt. Please take salt as per your taste. We will not add salt to that blender jar now, in which we have added curd. Add here half teaspoon garam masala and half teaspoon turmeric powder. And another half teaspoon I added to the blender jar. Half teaspoon roasted zeera powder. 1 teaspoon coriander powder. And 1 teaspoon kutti lal mirch. And then we need to give this whole thing a very good mix. I've taken here 1 cup water. So slowly add water to your palak mixture to get the desired consistency. Total besan I've taken is 1 cup. Complete ingredient details will be there in the description box. Do remember to check it out. To mix this pakodi mixture, total water that I've used is 3/4 cup. See how much you need. Whenever I make my palak pakodi mixture, I love to add in that sesame seed. तो 1 चम्मच भर के मैंने डाला है. It's optional. If you want, you can add. But do try it out. It gives a nice nutty taste to the pakodi. Finally, we will add to this some खाने का सोडा, मीठा सोडा, baking soda. Just 1/4 teaspoon. Give it a very good mix and keep this aside for 15-20 minutes. And now let's go and blend this curd to make the curry. So here I've taken a steel pan. Always take in a steel vessel to make your curry. This is the only vessel with which the khatti curry will not react. Aluminium, any kind of other metal can lead to food poisoning. So be careful always. Here I've added that half teaspoon zeera and methi, small pieces of cinnamon,
2-3 cloves in the hot oil along with hing, okay, and mustard seeds, some curry leaves. So use any bagar that you like. And then finally the masala that we had blended in the beginning in the small blender, that will add it here. अच्छा उसको भुनना है. And I added here 1 teaspoon coriander powder to the masala. Saute this for 2 to 3 minutes till it leaves oil. Okay, and after that add your curd from the bigger blender. And give it a good mix and ensure that the gas is slow. Well, I'm doing voiceover because my phone speaker has got spoiled. Video got recorded, the sound was completely blank. I added here 2 cup water. So now you need to cook this curry at least for 40 minutes. तभी कड़ी ज़बरदस्त बनेगी. Okay. I have added in total 2 cups water to this curry. And then I kept it for boiling on a slow gas. बीच बीच में आपको चलाते रहना है. Okay. और जब अच्छी तरह से कड़ जाए after 35-40 minutes, you need to add 1 teaspoon salt. You have to follow these tips and tricks to make excellent curry every time you make it in your kitchen. पकोड़े का जो बैटर था, जो मिक्सचर था, वो अच्छी तरह से फूल गया है. Now time to fry them. Okay? तो बस छोटे छोटे बॉल्स गरम गरम तेल में डाल के उनको अलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई कर ले. ओके, एकदम सिंपल है, आप सभी करते हो आपके घर में. Here I will share a tip. ये जब पकौड़ियाँ आप डालते हो ना तेल में, तो take something long like this to turn them. It is far more easier to turn them like this. Skewer or thin knife. तो पकौड़ियों को मैंने डायरेक्टली कड़ी में डाल दी है. सॉरी वो क्लिप नहीं दिखा सकी. बस कुछ करना नहीं है, आपको चाहिए तो आप एक उबाल दे दो. योर कड़ी इज़ रेडी एंड बिलीव मी सुपर टेस्टी है, सुपर टेस्टी. अब देते हैं तड़का. तो तड़के में मैंने ले लिया है वही जो हम लेते हैं, हरी मिर्च, ज़ीरा, मेथी, राई, कड़ी पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च. तो मैंने वो गोल वाली मिर्च भी ली और लंबी वाली मिर्च भी ली. मैं दोनों लेती हूँ. यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट इन तड़का. काश मैं यहाँ पे आपको एक तड़के की आवाज़ सुना सकती. माई फोन स्पीकर गॉट स्पॉइल्ड सो यू कांट हियर दैट sizzling sound of tadka. Sorry about that. So tadka is given, curry is ready, now time to serve. So friends, if you have really enjoyed today's recipe, don't forget to give your like, share and subscribe with your friends, family, neighbors, whomsoever you want to. If you still haven't subscribed, do consider subscribing my channel. Take very good care of yourself. Be safe, be happy, keep smiling. Good food, good mood. And until we meet next, don't forget to eat, love and pray. Bye.